Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Pratiksha Mishra. Let's take a look at what made news this week. General public in POK resented over high electricity bills and unreasonable taxation. Srinagar organizes National Art Camp, bringing renowned artists from different states together. A restaurant inspired from India's Vande Bharat Express opened at Katra railway station in Jammu. A newly opened Numerical Astrology Lab in the Army Goodwill School in Srinagar develops students' interest in Asian sciences. And in our special section of Incredible India, we take you to witness the celebrations of Diwali Festival happened all across the country. The people in Pakistan-occupied Kashmir are resented with the local administration who have burdened them with high electricity bills and unreasonable taxes. Amid galloping inflation and no subsidies from the stooge government of Pakistan, locals are up against the administration and launched widespread protests in the illegally occupied territory. They have resolved to continue their agitation against Pakistan and its proxy administration until their demands are met. We have a report. The businessmen, traders and local residents are resented over high electricity bills and additional taxes imposed on them by the administration. It has been around 4 months since civil society and locals are protesting against the administration. Anger of locals in Pakistan-occupied Kashmir is mounting against those sitting in Islamabad. Locals say, despite production of several megawatts of hydroelectricity in their region, they have to pay a high price for electricity. हम लोड शेडिंग के हिसाब से गुजरते हैं, बिजली हम पैदा करते हैं और फिर हमें पाकिस्तान के रेट पे महंगी बिजली दी जाती है। पूरी दुनिया में ये मसलमा उसूल है कि जहां पैदावार होती है वहां सस्ती दी जाती है चीज। तो हमारा ये मुतालबा था कि जो हम पे जालमाना टैक्स, देखिए यहाँ बिजली जो है पानी से पैदा हो रही है, लेकिन हमसे फ्यूल एडजस्टमेंट ने टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ तो फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं होता, पानी से पैदा होती है। तो इस तरह के जालमाना टैक्सों के खिलाफ हमने ये तहरीक शुरू की थी और 1 महीने में 4 शटडाउन को मामूली बात नहीं है, कामयाब 3 शटडाउन हुए, सिविल सोसाइटी इसमें शामिल हुई है। तो इस वक्त सिविल सोसाइटी और ताजर यकसू हैं कि हम इन जालमाना टैक्सों को हुकूमत से ख़त्म करवा के छोड़ेंगे। After observing 4 shutterdown strikes in just a month, the general public, businessmen and trader association have resolved to protest further if their demands are not met. The local economy in the POK has nosedived owing to skyrocketing inflation, high taxes and many small businesses going bankrupt in the region. कारोबार है नहीं है, कारोबार खत्म हो चुके हैं। ऊपर से लोड शेडिंग जो है ना, ये घंटों के हिसाब से होती है। फिर जो है ये जालमाना टैक्स है, घरेलू जो है वो 2 तरह के टैक्स लेते हैं। एक तो सेल्स टैक्स लेते हैं और घरेलू इन्हें बिजली के इन्हें उस पर भी इन्हें लेते हैं जी जनरल सेल्स टैक्स। मुझे ये बताएं, कमर्शियल जो है इस वक्त हम 56 से 60 रुपये इन्हें दे रहे हैं यूनिट के, और घरेलू जो है 25 से 30 रुपये में हमें पड़ती है। हम तो डबल मारे जाते हैं, दुकान का जो है ना वो डबल दिया, फिर घर का जो है ना वो भी दिया है। हम कहाँ जाएं, इतने इन्हें इनकम इन्हें है नहीं है, इनकम ऑफ सोर्सेज जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जालमाना टैक्स हुकूमत ख़त्म करे अगर ये चाहते हैं कि यहाँ इंतशार ना हो, यहाँ जो है मजीद किसी किस्म की जो है ना उनके खिलाफ शटडाउन ना हो। Highly inflated electricity bills and taxes are putting undue financial strain on the people of POK.
They blame the administration for corruption and levying unjustifiable taxes levied on the general public. वो पे टैक्स लगाए जा रहे हैं कहते हैं चलो इनको नोचोड़ते जाओ तो शायद यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बिजली चोरी बरकियात का महकमा खुद करवा रहा है। इसके लाइन स्टूडेंट और दीगर अफसरान मिल के नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो बोथा वसूल करते हैं नीचे का अमला ये ऊपर तक जाता है, तो उसको कवर करने के लिए ये जो है ज्यादा जो है ना वो चार्जेस हमसे लेते हैं। In the last 4 months, the people of POK have not paid electricity bills and during protests burned the bills publicly to show their resentment against the government. They want to hold a peaceful dialogue with the administration, but the apathetic government is not ready to listen to their concerns. हमने जो है ना ये 3 महीने हो गए बिल नहीं दिए हैं, इसी वजह से नहीं दिए कि जालमाना टैक्स खत्म करें। टैक्स खत्म करें कि आप पहले भी बिल देते रहे, आप भी देंगे एक अच्छे शहरी की तरह। हम जो है ना उस पर एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह हम नहीं देंगे। आगे तारीख भी चलेगी, मजीद शटडाउन भी होगी। एक महीने अगर हमने 4 शटडाउन कामयाब किए हैं तो आगे हमें जो है ना 5 करने पड़े महीने में, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। The locals are angry over the current Prime Minister of POK and his attitude towards their concerns. The widespread protests all across POK are the manifestation of public anger towards Islamabad and its proxy administration in the illegally occupied territory. तो नवाज लाख साहब जो है ना आकड़ के ना रहे हैं, वो जरा संजीदगी दिखाएं। उन्होंने हुकूमत करनी है तो उनको जो होना चाहिए, ये पहले हुक्मरान है कि जिनके खिलाफ 1 महीने में ये पहले वजीर आज़म है जिनके खिलाफ 1 महीने में 4 दफा इन्हें पूरा कश्मीर में शटडाउन हुआ है, और मुजफ्फराबाद इन्हें जो दाल खाफा यहाँ तारीखी किस्म के शटडाउन हो गए। ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ है। उनको सोचना चाहिए ये कब तक जो है एजेंसियों के सहारे पे हुकूमत यहाँ करते रहेंगे, ये नहीं है देर से देर पा चलने वाले। It has been over 7 decades since the locals have endured Pakistan's injustice and draconian policies. The public anger against the stooge administration in POK has reached the tipping point. The resolute public in POK seems to go any length to get their rights and demands fulfilled. For tourists, Srinagar Valley in the Union Territory of Jammu and Kashmir is undoubtedly one among the best destinations. But for art lovers and artists, the place is an inspiration, an abode of nature which they try to embed in their poetries, paintings, sculptures and every other form of art. To encourage various renowned artists to further boost art culture, a national camp was organized in Chashma Shahi Garden in Srinagar, which brought ideas, cultures and traditions of different states under one roof and further improved and enhanced the quality of work by seasoned artists. Let's take a look. Surrounded by mystical mountains of Himalayan ranges and embraced with nature's mesmerizing beauty, Kashmir Valley is a surreal manifestation of heavens on earth. For centuries, artists, poets and painters have been visiting Kashmir to find inspiration for their next art or composition, and the abode of nature never seems to disappoint. Recently, a national art camp was organized in Chashma Shahi Garden in Srinagar, inviting artists from nooks and corners of our country to explore and capture Kashmir's enthralling beauty in their art.
जहाँ तक कश्मीर की ब्यूटी का ताल्लुक है, हमारे कश्मीर में आर्ट एंड क्राफ्ट ही नहीं बल्कि हमारे नेचुरल सराउंडिंग, सेटिंग एंड द पीपल, हाउ दे आर लिविंग और उनका रिलेशन क्या है, इट इज़ कनेक्टेड। तो इसका एक इतना कल्चरल इम्पैक्ट है आर्ट के हवाले से। हर एक चीज़ में आर्ट है, कोई भी चीज़ हम दिखाएंगे तो उसमें हमारा आर्ट झलकता है। हमारे कश्मीर की जो ब्यूटी है, जो हमारे कलर्स है, जो हमारे टोन्स है, शेड्स है, सेटिंग है, इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर्टिस्ट माइंड। तो इसलिए दुनिया भर से पेंटर्स पुराने ज़माने में भी, मेडिवल टाइम्स में भी या आज भी कश्मीर आके इस ब्यूटी को कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैनवस पे। The charming climatic conditions of Kashmir Valley and exchange of ideas, cultures, languages of different artists all together brought a unique touch to their arts. 50 आर्टिस्ट जब एक छत के नीचे काम करते हैं, उनका खाना पीना, कल्चर वगैरह बातें सब कुछ एक्सचेंज होते हैं, वहाँ से एक अच्छा बाउंड होता है और अलग अलग स्टेट के लोग जुड़ जाते हैं फिर और अच्छा काम करते हैं। वो फिर अपने यहाँ बुलाते हैं और हम उनके यहाँ जाते हैं, तो एक आर्ट का डेवलपमेंट होता है, हमारा आर्ट इंडिया का डेवलपमेंट होता है। The National Art Camp in Srinagar was a great platform for developing the realm of art in the country and also a wonderful way to promote tourism. The artists hailed the efforts of government in organizing the camp and wish more such camps be organized in Kashmir to enhance an artist's learning and help promote the local art also. ये आर्ट कैंप जो चश्माशाही में हो रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव कैंप है और जिसमें बाहर के आर्टिस्ट और लोकल आर्टिस्ट आपस में काम कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है। और इस तरीके के आर्ट कैंप्स अगर कश्मीर में हों तो यहाँ के आर्टिस्टों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इन आर्ट कैंप्स से। The government and the local authorities organize many art festivals and camps in the Srinagar Valley. Through these efforts, local artists are getting recognition at national and international arenas. For the development of art culture and highlight the local artworks at world level, these national art camps are playing a great role. Moving on, the Union Territory of Jammu and Kashmir is on a path of development. Apart from infrastructure, agriculture, skill development, the religious tourism in Jammu has been identified as a major sector of growth. In a bid to boost religious tourism, the government launched Indian Railways flagship train Vande Bharat Express on New Delhi-Katra route, making journey of thousands of pilgrims coming to visit Mata Vaishno Devi temple much more comfortable and swift. With this development, local economy in the city has seen a massive rise. Riding this wave of growth, a local entrepreneur has opened a restaurant inspired from the design of Vande Bharat Express. Let's take a look. Every year, millions of devotees from different parts of the country reach the Jammu city to offer prayers at one among the most sacred temples of India, Mata Vaishno Devi Mandir. The Katra town at the foothills of Trikut mountains is the starting point from where the pilgrims start their trek towards the temple. In last many years, the area has seen a tremendous development. With opening of a rail link to Katra and launch of Indian Railways flagship Vande Bharat Express train on Delhi-Katra route, the local economy in the region has boomed. Riding the wave of development, a local entrepreneur came up with a unique idea of opening a restaurant inspired from Vande Bharat Express. मैं 1981 से यहाँ पर हर साल आता हूँ माता के दर्शन करने। मैं जब पहली बार यहाँ आज सुबह आया तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया और इससे लगा कि दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट। जो आधुनिकतम जो सुविधाएं जिस पैसेंजर को चाहिए वो यहाँ पर हैं
और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैंने यहाँ के जो मैनेजर हैं मिस्टर गौरव अरोड़ा, उसको बोला भी है कि ये तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलेगा, लोकेशन की दृष्टि से देख लो और हर सुविधाओं की दृष्टि से देख लो, ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं मानता हूँ कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम हमने ये रेस्टोरेंट यहाँ पे देखा है और ये जो कोच है, कोच का आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो सजावट है वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और खाना भी यहाँ पे रीजनेबल है। The restaurant will stay open 24/7 in service of devotees and passengers coming to Sri Mata Vaishno Devi Katra railway station even at the odd hours. It has a capacity of 64 customers inside, same as a standard railway coach has, and 70 can be served outside. As per the manager of the restaurant, the prices are kept reasonable so that more people can experience this unique facility in Katra. सबसे पहले तो कटरा के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे उनको एक ट्रेन का कोच का रेस्टोरेंट मिला है। तो यहाँ पे 64 की कैपेसिटी अंदर की है और बाहर की 70 की कैपेसिटी, और यहाँ पे हमारी स्पेशल थालीज सब कुछ मिलेगा, बेवरेजेस ऑल आइटम्स यहाँ पे मिलेंगी और जेन्युइन रेट में है पूरे कटरा से। The opening of a rail route to Katra and thereafter launch of Vande Bharat Express in 2019 has further eased the journey to Mata Vaishno Devi Temple for devotees and tourists. Through these government projects, the religious tourism in Jammu has grown and local businesses too are witnessing development. In order to build scientific temper and an interest in ancient sciences among the school children, the Army Goodwill School in Srinagar has developed a Numerical Astrology Lab with state-of-the-art equipment. A team of experienced astrologers and scholars will not only train students in theoretical way but also provide some practical insights in the subject. Equipped with telescopes, computer softwares and an extensive library, students will have access to a wealth of information that aids their exploration of astronomy and astrology. Let's take a look. The state-of-the-art Numerical Astrology Lab at Army Goodwill School, Hanzik in Srinagar, is a commendable initiative to build a scientific temper and develop interest of students in the ancient science of astrology. The initiative has kindled a curiosity among the students about the outer space and realm of numerical astrology. With the world-class science instruments and equipment at their disposal, these students can now gain theoretical as well as the practical insights of the subject. I believe कि students को जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल में दिखाया जाए उतना ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट्स होते हैं, उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आती है. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव्ड. और जितना मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, लाइक हाँ टीचर्स तो अपना बहुत बेस्ट देते हैं, मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट करते हैं कि वो हमें समझाए, लेकिन स्टिल वो फिर प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऐसे इसको डिस्कवर किया था. ये हमारी एक्साइटमेंट को बहुत इंक्रीज करता है, हमारे इंटरेस्ट को टुवर्ड्स द सब्जेक्ट बहुत मतलब इंक्रीज करता है कि हाँ इसके बारे में हम और जानें. इसी तरीके से हम भी एक और लॉ डिस्कवर करें. मतलब इन चीजों को देख के अगर न्यूटन या आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया है तो हम भी, ये यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए जो हम कर सकते हैं. A team of experienced astrologers and scholars are tasked to impart knowledge of astrology and conduct interactive sessions with students. They assist the young minds in stargazing and celestial observations, thereby igniting a sense of curiosity and wonder among them. I am too glad to be the part of this school and especially the part of this astronomy lab. I'm in charge of the lab. Students come here for the practicals. They know much more about their theories,
and what is going on in the space. There are so many equipments related to the physics, related to the astronomy. First, sir, if you can look at this, there are Newtonian reflecting telescopes, 5-inch, 3-inch, through which we can explore the space. We can see sun, the stars, and the planets, so on. And there are a model related to the solar system. Equipped with world-class telescopes, computer software, and an extensive library, students get access to a wealth of information about the stars, galaxies, and movement of celestial objects. The lab acts as a platform for students to engage in research and contribute to the field of numerical astrology. In guidance of experienced mentors, students can also undertake independent projects and discover new dimensions of this age-old practice. हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी लैब में हैं, जहाँ हमें पढ़ाई के रिलेटेड सब कोई सामान मिलता है, जिससे हम इससे सीख भी सकते हैं. हमारे पास यहाँ पर हम कॉस्मोलॉजी के रिलेटेड हम बहुत कुछ जान सकते हैं. हमें ये स्कूल प्रोवाइड करता है. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हम प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ, एंटी ग्रेविटी मिलने को हम देख सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे टेलीस्कोप हैं, जिसकी वजह से हम जो पढ़ते हैं किताबों में से, वो हम प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं उनके. The Government of India and the Indian Army are giving impetus to the development of young minds in the Union Territory. Be it sports, arts or academics, the youngsters of Jammu and Kashmir are shining in every field, and the government is leaving no stone unturned to support them to the fullest. Festivals in India are a part of people's lifestyles that bring joy and positivity. Recently, India celebrated the Diwali Festival, also referred to as Deepavali. The festival holds cultural as well as religious significance, which not only binds families and society as one, but also inspires mankind to always choose the right path of wisdom. Let's have a look. Festivities in India are a way to preserve its age-old traditional values and ancient culture. Festivals not only bring enthusiasm and strengthen the bond of the community, but also reinforce their significance among the younger generations. The festival of light, Diwali, often called Deepavali, was recently observed in India and around the world. The name Deepavali comes from the Sanskrit words Deepa and Avli, which means light and row. The Diwali festival is celebrated in the Hindu lunar month of Kartik on the darkest of nights, which usually falls between mid-October and November. The festival is considered auspicious as people celebrate new beginnings and prosperity. धनतेरस है तो अच्छा मौका है, शुभ माना जाता है, तो मेरे को पसंद आया है. मैंने 2-3 चेन पसंद करी है मम्मा के लिए भी. मम्मी भी शॉपिंग करने आई है यहाँ पे. धनतेरस के दिन यही माना जाता है कि हम लोग जो है आज के दिन गोल्ड वगैरह ये खरीदें, और ये लाना घर में शुभ माना जाता है. एक लक्ष्मी घर में आज के दिन आनी चाहिए, उससे यही मान्यता है कि धन धान्य घर में आता है. The 5-day-long festivity begins with Dhanteras, a day on which people purchase new utensils, jewelry, property and vehicles and worship Lord Dhanvantari for prosperity. The next day is Narak Chaturthi. On the following day, people celebrate the victory of the Hindu god Krishna over the demon Narkasur by taking an oil bath to cleanse themselves from negativity. Apparently, the third day marks the main day of the festival, also known as Lakshmi Puja. People decorate their homes with colorful designs using colorful powder called Rangoli, along with diyas to welcome goddess Lakshmi and Ganesh. Every year, this is one festival that we all come together, no matter what, wherever we are. We come together and we celebrate this festival so well.
The Diwali festival is also led by the bursting of crackers and fireworks at night. Meanwhile, devotees worship the idols of goddess Lakshmi and Ganesh for prosperity and peace of their families. According to Hindu mythology, on this day, Lord Ram returned to his kingdom Ayodhya after the exile of 14 years, and his homecoming was celebrated with lighting of earthen lamps. Moreover, people around Indian states hold exhibitions and organize Diwali fairs where artisans as well as craftsmen show their creativity. आज के दिन में यही दुआ मांगा हिंदू मुसलमानों में आपस में घर पर भाईचारा रहे, प्यार रहे आपस में। दिवाली के दिन हम दिया पटाखे फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं, खाना बनाते हैं अच्छा और एक दूसरे को बांटते हैं, प्यार मोहब्बत आपस में प्यार करके बैठते हैं। The fourth day of Deepavali is Govardhan Puja, when people worship Lord Krishna and Govardhan by mounting cow dungs in their homes as a thanksgiving. The last day of Diwali celebrates Bhai Dooj, dedicated to brothers and sisters. On this day, brothers visit their sisters and offer them gifts which symbolize their love and affection for them. A festival like Diwali is crucial to mankind, as this not only brings families together but also inspires one to pursue the right path by helping those in need. Such festivals provide a platform to the traditional craftsmen as well as who take this as an opportunity to display their creativity while binding for a fair amount of their livelihood. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.